इन चारों में कर दिया ना, ये भी कर दिया। Your microphone is on. Sir is joining very soon, students. Just wait for a minute. You may have to show more times.
Audible to all? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Actually, there is some technical problem. Actually, I have joined in another group. Actually. Okay. Anyway, let's start. Let me introduce myself. Myself, Dr. Sudhanshu Sekoseti. I'm working as an assistant professor in Medical College. Okay. So, today we'll discuss about the management aspect in hospital, in managerial and systemic approach in hospital waste management. Okay. Before that, you can introduce yourself. I want to know the students who are actually online and from which place. Okay. Please introduce one by one. Hello. Please tell your name and your place from where you are studying or what. Sanjeev. Yes, sir. My name is Sanjeev Kumar. I am from Batinda, Punjab. Okay, Sanjeev. I'm working in a district hospital as a nodal officer, quality nodal officer. Okay, that's good. So myself, Surbhi, Fatehbad, Haryana, working as a nursing officer in District Hospital, Fatehbad. Who else? Rabindra, Pooja, Meera, anybody? Good afternoon, sir. Ah, Sir, I am Subham Yadav from Bhiwani, Haryana. okay. Sir, I am studying pharmacy currently. Okay. Sir, myself Meera Sanish, working as nursing officer in Delhi. Okay. You are in Delhi, from Delhi, na? Okay. Good evening, sir. I am Ravi Kumar from district Fatehpur. I am working as community health officer in Nandod. Okay. Anybody left? Shubham? I am Pooja from Delhi. I am dialysis Okay. technician. Okay. Yes. Very good That's good. afternoon. I'm In which? Divraj from Bangalore, working in Nimanx. Okay. Okay. So you are working in Nimas, huh? Okay. That's Yes, sir. Yes, sir. okay. So today we'll discuss about the managerial aspect. Okay. What we can do this course? What is the managerial aspect? If you are working as a manager at or the administrative post in a hospital, how can you manage? What are the different things or the aspects are there to manage hospital waste management? Okay. So before that, we'll discuss about the what is healthcare facility. Okay. What is healthcare facility? Healthcare facility usually it is HCF. It's also called as HCF. HCF is a component which covers the compassion, commitment to the quality, okay, and your working togetherness. Okay, we'll work in a group and respect to each other. From the higher post, if you are in a manager post, respect to the lawyer or your super class also. Okay, so respect each other, working together. This is the healthcare facility of a manager. Okay, so this is a basic. So what is the function of a management? Okay, what is the function of a management? So management is different function. Like one of all, this is a your short note or a long question. It may come as a what is the function of a management? Okay, just remember if you are not noting down, just note it. This is a question. It may come as a long question or a short question. Function of a management. Okay, the first one is your planning. Number one is your planning. The planning. So you have to go for a planning which set the objective. What is the objective of our work? Okay. So can I add some Hindi also? Yuvraj, you have any problem? Yes, sir. You can. Please. Okay, that's good. So हम लोग जो प्लानिंग करते हैं उसमें एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ओके, सो दैट हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट इज योर प्लानिंग.
Second year is organizing. So organizing मतलब क्या होता है? It includes how to organize our class. Sounds are coming. Hello. Okay, hello. Is it audible now? Yes, sir. Yeah. Yes. Audible. Yes. Yes, sir. Okay. You are audible. The second point is your organizing. Okay. What do you mean by organizing? We will organize our different team or who are working with us. Okay. Like organizing of our subordinate, dividing them into different group, different category, and explaining their job. उनका काम क्या है उनको बताना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है. That is, you are organizing a system. Okay. That is the second point or second function of a management. Third is your staffing. So you have to be a good. Sima, can you mute your phone? Sima, can you mute your phone? Thank you. Third is your staffing. So you have to choose your staff, right person in for right job. जो जिस काम में मान लीजिए एक DTP में एक्सपर्ट है, you can put them in the DTP center so that he can write all the computerized work. Somebody is organizing. किसी का मतलब पब्लिक रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, उसको डिफरेंट काम उस काम में लगा दो. दिस इज योर स्टाफिंग पैटर्न. यू हैव टू मैनेज योर स्टाफिंग. ओके. फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग. स्टाफिंग करने के बाद वो हैव टू डायरेक्ट, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है. उसके बाद द फिफ्थ वन इज योर कंट्रोलिंग. उसको काम देने के बाद यू हैव टू कंट्रोल देम, वो ठीक से कर रहा है कि नहीं. ओके. यू हैव टू ऑब्जर्व देम और यू हैव टू कंट्रोल देम. सिक्स्थ पॉइंट इज योर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट वर्क ग्रुप. नीचे से लेके ऊपर तक यू हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल द एम्प्लॉइज रिलेटिंग टू जिनको जो काम दिया गया उनको सब कोऑर्डिनेट करना है, ठीक से किए कि नहीं, कुछ रह गया क्या, प्रॉब्लम कुछ है और उसको बेटर कैसे कर सकते हैं. उसके बाद सारे काम को यू हैव टू रिप्रेजेंटिंग देम इन ए फ्रेम. ओके. क्या किया हम लोग? यू हैव टू रिप्रेजेंट देम, यू हैव टू प्रेजेंट देम इन डिफरेंट scenario. Okay. This is the function of a management. Okay. So this may comes a short note also. Okay. Next is what is the management principles. Okay. Management का क्या क्या principles है? The first one is division of work. Okay. Division of work मतलब जैसे हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो है जिसको जो काम दिया गया है वो सब हमको डिवाइड करना है. जो बिग टास्क, स्मॉल टास्क. ओके. इसको जो दिया है टू मैनेज द डिवीजन ऑफ द वर्क. सेकेंड पॉइंट इज ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. जिसको जो काम दिया गया है दे विल टेक केयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर वर्क. डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या है? दिस इज द थर्ड वन. डिसिप्लिन रेस्पेक्ट फॉर एग्रीमेंट दैट आर डायरेक्टेड एट अचीविंग ओबीडियंस. ओके. मतलब जो काम दिया गया है यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन. ओके. द फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड. ओके. जो कमांड मिलता है उसके वी हैव टू ऑब्जर्व एंड वी हैव टू डू दैट. सेंट्रलाइजेशन ऑफ द अथॉरिटी. ऊपर एक रहेगा, उसके नीचे एक रहेगा. सो अथॉरिटी जो है, जो मैन रहेगा वो सेंट्रलाइज रहेगा, वो डिफरेंट ब्रांच करके वी हैव टू डू द वर्क. सेवेंथ वन इज द स्केलर चेन. व्हाट इज स्केलर चेन? चेन ऑफ सुपरवाइजर from higher to lower rank should not be bypassed unnecessary. Okay. मतलब चेन में रहेगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. Okay. The eighth one is your order. These are the principle of management. Okay. This is also come as a long question. Okay. Principle of management. Eighth one is your order. This is a place for everything and everything in a place. मतलब सबको एक जगह रहना है, एक जगह पे सब कुछ रहना है. Okay. Orderly we have to manage everything. That is order. Remunerations क्या है? You have to pay extra remunerations or the remuneration for that work. ज़्यादा काम किया और दूसरे आदमी के लिए काम किया, you have to give the remunerations. The 10th point is your stability of the tenure. So unnecessary turnover or transfer of employees
आर बोथ कॉज एंड इफेक्ट द बैड मैनेजमेंट। ओके, उसको यहाँ पे लगा दो, उसको हटा दो, उसको लगा दो, इससे क्या होता है कि मैनेजमेंट ठीक से हो नहीं पाते। ओके, तो स्टेबिलिटी ऑफ द टीम है, तो उसको एक जगह पे रहने से यू विल गेट गुड रिजल्ट। द 11th पॉइंट इज योर डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है? बिकॉज मैनेजर मैनेज थ्रू द वर्क of others, this should be delegations of the authority. Okay, the 12th point is initiative. Okay, so the executive should initiate different work so that the subordinate will follow them and they will work together. The 13th point is subordination of the individual interest to the organization interest. Okay, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, if you are in the managerial post, you have to do such work. काम ऐसा करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में रहे या दे विल गेट बेनिफिटेड। एंड इक्विटी, इक्विटी मतलब सबके लिए सब समान है, मतलब वो हायर से लोअर एंड यू हैव टू गिव इक्वल रेस्पेक्ट एंड इक्वल वर्कलोड फॉर ईच अदर। दीज आर द डिफरेंट मैनेजरियल प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कम है लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, दीज आर द 14 पॉइंट्स एंड यू हैव टू राइट। इसमें कम है शॉर्ट नोट आल्सो। ओके, समझ पाए थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. ओके सर। ठीक है, तो ये आप लोग किताबें भी है ये सब। ओके, यू कैन रीड, you can have some note also so that it will easy for your theory paper also. Right, the next part is the planning of as a management function and technique. ये क्या है? planning is a important managerial function as well as a management technique. मतलब क्या? मैनेजमेंट का प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ओके, एंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू द प्लानिंग। क्या क्या स्टेप है? द फर्स्ट इज योर सिचुएशनल एनालिसिस। ओके, सिचुएशनल एनालिसिस क्या है? जो कोर प्रॉब्लम एंड द अपॉर्चुनिटीज आर असेस्ड बाय इन्वॉल्विंग ऑल स्टॉक होल्डर इंक्लूडिंग ऑल ऑप्शंस। मतलब क्या सिचुएशन है, हम जिस काम कर रहे हैं उसका सिचुएशन क्या है, उसको एनालिसिस करना है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान। ओके, दिस इज प्लानिंग एज ए मैनेजमेंट फंक्शन। ओके, स्टेप बाय स्टेप कैसे एक प्लानिंग को हम लोग अप्रोच करेंगे। सो पहले जो काम करना है हमको, उसको फर्स्ट सिचुएशन क्या है उसको एनालिसिस करना है। सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्रायोरिटाइज। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, साफ सफाई हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे वो गंदगी पड़ा हुआ है, वहाँ पे वो क्लीनिंग नहीं हो रहा है, तो इसमें से जो प्रायोरिटी है, जैसे कोई somebody is working in the dialysis unit, तो डायलिसिस यूनिट शुड बी डिटेक्टिंग, शुड बी स्टरलाइज, तो उसको क्लीन करके कैसे स्टरलाइज करना है, दैट इज आवर प्रायोरिटी। तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको कैसे डंप करना है, कैसे डिस्पोज करना है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो प्रायोरिटी होगा उसको पहले करेंगे, देन बाकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्रायोरिटीज। थर्ड इज योर एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है? एस्टेब्लिश द गोल and objective क्या होगा, we have to measure and we have to good review the risk, limitation and elaboration of the mitigation measures। मतलब क्या है इसका? तो हम लोग जो काम करेंगे उसमें कितना रिस्क है और क्या लिमिटेशंस है। ओके, जैसे मान लीजिए कि एक HIV पे और HCV का पेशेंट है, उसको क्लीनिंग करना है और उसका ये करना है, सब नीडल्स वगैरह सब का निकालना है, तो जो भी निकालना है देयर इज सम रिस्क की उसको इन्फेक्शन हो सकता है। सो वो इन्फेक्शन को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, क्या क्या वो मेजर लेगा, उसको रिव्यू करके वी विल स्टार्ट द वर्क। द फिफ्थ पॉइंट इज डिफाइनिंग ऑपरेशनल पॉलिसी एंड एस्टेब्लिशिंग द सिस्टम। उसका मतलब क्या है? एक ऑपरेशनल पॉलिसी इज स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या हम लोगों का एम होगा, एम एंड ऑब्जेक्टिव उस काम का, उसको ऑपरेशनल पॉलिसी में डालना होगा कि हम लोग ये एक करना है, हम लोग आज करना है या ये महीने में ये करना है। यू हैव टू गो फॉर ए ऑपरेशनल पॉलिसी, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट ऑपरेशनल। ओके, नेक्स्ट वन इज योर सिस्टम्स आर मेड ऑपरेशनल। ओके, जो सिस्टम हम लोग तैयार करेंगे उसको कैसे ऑपरेशनल करेंगे वो सब
We have to decide. And the outcome of the planning process is the plan document. जो आउटकम होगा उसको भी हम लोग नोट डाउन करेंगे, उसको मैनेजमेंट. तो these are the step by step approach to the planning technique. ठीक है. Then is your management tool and techniques. Okay, this is very important. इसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, so you have to listen carefully. Okay, कुछ भी डाउट हो you can ask. So management tools and techniques में क्या है? There are several management tools, okay, which are used by the hospital manager as mentioned in the box number. If you have books or soft copy, you can write page, go to the page number 21, okay, box 1.10. Okay, so there are so many techniques are there. Okay. It is written, one is operational research technique, OR, this is a short note. Work study, this is also a short note. Word simplifications, quality circle, this is a short note. Computer aided design, budgeting, manager by objective MBO, this is also a short note. Technique based analysis, SWOT, okay, this is also called as strength, opportunities, okay, and all decision tree and forecasting. So these are the all different managerial, several management techniques. Okay, the first is your operational research. So operational research क्या है? There are so many techniques are there for operational research. Okay, the first one is your economic order quantity. Okay, this is also a short note. EOQ. इसका मतलब क्या है? We will go to the example. Okay, in simple way. Just a minute. Can you hold it for 2 minutes? Okay, just a break. 1 minute. I'm just. Hello. Hello. Yes, sir. Is Yes, it sir. audible? Okay. So we'll discuss first Now the it's EOQ. Okay, economic order quantity. EOQ. This may come as a short note also. This is a type of operational technique of operational research का ये एक type है. Okay, that is EOQ, economic order quantity. उसका मतलब क्या है? Two cost are equal. मान लीजिए एक ऑर्डरिंग कॉस्ट है, एक कैरिंग कॉस्ट है. ओके, एक चीज हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, उसका कॉस्ट मान लीजिए 100 रुपये है, उसका कैरिंग कॉस्ट है 100 रुपये. सो एक ग्राफ है, इफ यू आर लुकिंग एट द योर बुक और सॉफ्ट कॉपी, देयर इज अ ग्राफ फिगर नंबर 1.2. द कॉस्ट एंड क्वांटिटी टू द ग्राफ शोज कॉन्सेप्ट ऑफ EOQ. सो इसमें एक्स एक्सिस में ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी है और वाई एक्सिस में योर कॉस्ट, एनुअल कॉस्ट है. तो कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट व्हेन देयर इज बाइस, जहाँ पे वो मिलता है, दैट इज योर EOQ. मतलब टू कॉस्ट आर इक्वल. और देयर इज अ फॉर्मूला फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी with EOQ is equal to root over of 2AOC by IC. A is your annual demand of the item, OC is your ordering cost, IC is your carrying cost per unit. इसमें क्या होता है? There is always one quantity at two cost and are equal and total of the cost is minimum. मतलब दोनों का
कॉस्ट एक ही है, मतलब कैरिंग कॉस्ट एंड द ऑर्डर कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड इज इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी। इसमें काम है शॉर्टकट। समझ में आया कि नहीं? नहीं सर, समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? ठीक है। नहीं आया। ऑर्डरिंग कॉस्ट सर होता है, आपने पीपीटी, सर आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है? नहीं पीपीटी नहीं है, पीपीटी नहीं है। योर वैसे बुक्स और योर एनी सॉफ्ट कॉपी यू कैन लुक। नो इश्यूज। ओके, इट इज इन बुक इज आल्सो प्रोवाइडेड टू यू, तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर देखेंगे तो दो कॉस्ट हैं जो कि इक्वल है एट ए टाइम, इट इज इक्वल। मान लीजिए कैरिंग कॉस्ट है और ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कुछ सामान हम लोग मंगाते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट है, उस कैरिंग कॉस्ट भी होता है। जहाँ पे ये दोनों कॉस्ट मिलते हैं, दैट इज योर EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, मतलब दैट इज द मिनिमम कॉस्ट जहाँ पे होता है। ओके, जैसे हम लोग कुछ मंगाते हैं, टेंडर होता है ना, हॉस्पिटल में कुछ मंगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जिसका कॉस्ट जो एक चीज का जो लोएस्ट कॉस्ट में देता है उसको हम लोग परचेज करते हैं, उसी टाइप का ही है ये इसमें, द मिनिमम कॉस्ट। ओके, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, जिसमें कम है शॉर्ट नोट ऑल्सो। नेक्स्ट इज योर ABC एनालिसिस। ओके, ABC analysis is another type of your operational research or operational technique. इसमें क्या होता है, this is another tool of management tools, right? ABC analysis ये भी आ सकता है आपका शॉर्ट नोट में। इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ग्राफ हुआ है, ABC एनालिसिस ग्राफ। इसमें 3 कैटेगरी, क्लास 1, क्लास B, क्लास A एंड क्लास C है, ABC। तो क्या होता है कि टोटल परसेंटेज ऑफ आइटम, उसको टोटल परसेंटेज ऑफ यूजेस वैल्यू, कितना आइटम मंगाते हैं, कितना यूज करते हैं। जैसे क्लास 1 का हम लोग 10% मंगाते हैं एंड 70% यूज करते हैं। क्लास 2 का 20% मंगाते हैं और 20% यूज करते हैं। और क्लास C का हम लोग मंगाते हैं 30%, 70% और यूज करते हैं 10%। इसका मतलब क्या है, जो चीज़ हम कम ABC का मतलब, इसका मतलब वो है तो 20% of consuming items consume almost 70% of the total budget. Okay, तो A, क्लास A एंड B बजट का सबसे ज्यादा लेता है और सबसे ज्यादा कंज्यूम होता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज ABC ग्राफ। ओके, ए समझ में आएगी नहीं? मतलब जो क्लास ए है वो कॉस्टलियर है, वो कॉस्टलियर है, और क्लास सी जो है चीपर है, उसका यूज भी कम होता है। ठीक है, और क्लास ए एंड बी 80-20 रूल, यस 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 एग्जैक्टली, ठीक ठीक ठीक, इट्स लाइक दैट। ओके, this is called as ABC analysis graph. Okay, this is another operational research or operational technique. Next is your just in time JIT technique. Okay, this is Japanese technique and it is gaining famous or very popular all over the world nowadays. Okay, इसमें क्या है, जीरो इन्वेंट्री और स्टॉकलेस परचेज, कोई स्टॉक नहीं होगा उसमें, डायरेक्टली परचेज होगा, डिपेंड ऑन द आइटम। हमको ये चाहिए, इसको डायरेक्ट परचेज करो। उसमें क्या होता है कि लॉस नहीं होता। मतलब हम लोग कटन चाहिए, कटन मान लीजिए 1 टन चाहिए, हम लोग डायरेक्ट कॉटन 1 टन और कुछ नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट स्टॉकलेस परचेज होगा, जो चाहिए उसको हम लोग वी कैन परचेज। JIT, दिस इज जापानीज टेक्निक। ओके, another technique is your queuing theory और वेटिंग लाइन मॉडल। ओके, इसमें जो डिमांड होगा, मान लीजिए क्यूइंग, जैसे क्यू में हम लोग कहते हैं जो बारी आएगा तो हम लेंगे, उस टाइप का ही दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टेक्निक ऑफ OR और मतलब ऑपरेशन रिसर्च। इट assumes that a linear relations exist between the variables and that limits the variation can be determined. This technique is used for optimum utilization of the resources. This is a mathematical technique for the purpose of optimal allocation of the resources.
So this technique, linear programming, or this is also called as LP, which is requiring objective, clear objective, and there is constraint or restriction of material. Non-negative conditions like LP requires that the value of the variables must be 0 or more, but never negative. Okay. So this is called as linear programming, LP. So इसमें से the important one is ABC analysis and your EOQ analysis. EOQ. Okay. So you have to go through your book, and any doubt, you can send your mail. Right. The next is your sequencing. Okay. Linear programming के बाद है sequencing. So managers are often confronted with the situation where they have to decide the sequence in which they have to carry out multiple tasks to maximum returns or output. So in such problem, as called as a sequencing problem. Like in BMW, there is segregation, collection of the bag, color coding. These are all you have to go for a sequencing. The next one, fifth one, operational technique is your network analysis. So network analysis is also important. These two analysis, like your one is PERT, program evaluation and review technique. This is also a short note question, which requires PERT requires list of all activities required for the completion of the project, link these activities with each other. Okay, estimate the exact time required for complete of the each activities, and there is calculation of the path. PERT also this is also called as critical path method, or CPM. This is also called as CPM. As the network activities and their lineage allows reduction of a critical path, that is longest path to complete the project. This is delayed due to the OPMT. मतलब OPMT. Okay. O is your optimized time, P is your pessimist time, M is your most probable time, and T is your expected time. So PERT depends on these factors. Optimized time, mystic time, your most probable time, and expected time. So T is equal to O plus 4M plus P divided by 6. This is the calculation. PERT. PERT is also a short note. So next management tool and technique is your second one is your work study. So these are all whatever we have discussed are your operational technique. Okay. Next is your work study. Work study objective of the work study are to assess the labor utilization, reducing fatigue, increase satisfaction, standardization of the work, and machine utilization, etc. It is carried out by the collecting relevant information about the ongoing method of working, making a flow of chart, and critically examine the information, see improvement of. Okay, so work study making, we have to go for the utilization of the your labor. So for that, we have to go for quality circle. Quality circle, quality control circle क्या है? This consists of group of staff members who meet regularly to discuss and solve the common problem that they face in their work area. That is called as quality circle or quality control circle. Next is your computer aided design. The computer aided design is a part of engineering dealing with the designing 3D computer object model by utilizing the specialized software. For example, the medical field, there are 3D computer modeling replacing the organs and other body parts for the teaching and the simulations. So this is also called as computer aided design. So 3D जो different parts or different जैसे mannequin हो गया. So these are replacing the original part. Okay. Mannequin. Next is your budgeting. So budgeting is very important.
In budgeting, zero based budget is ZBB. First is your budgeting में क्या है? Zero based budgeting. This is a type of budget the manager are asked to justify the demand for fund independent of the past year. तो जब भी as a manager you have to ask for a budget, you have to justify your fund. उसको कैसे क्यों इतना पैसा चाहिए, क्या करना है, you have to present in a manner that top manager can evaluate and compare it with the other activities for the same work previously done. So the zero based budget, ZBB budgeting, this is one part. Second is a performance budgeting. This is a type of budgeting in which, supported by the planning commission in the public sector, and the budget identifies the activities that are needed to achieve a specific objective. The funding agency allocate funds to the activities and not to the department. And the performance budget monitor the utilization of the budget in reference to the different activities throughout their achievement of identification physical target. Okay, this is performance. कैसे perform करते हो उसके हिसाब से you are paid for the budget. The next technique and tools is your management by objective, MBO. This is a process where the senior manager and the worker in a unit identify the common objective, outcomes, and contribute by each member of the team in a manner that the resources are utilized in the best possible manner. इसमें क्या होगा, मैनेजर एंड वर्कर एक कॉमन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे एंड मिलके उस काम को करेंगे फॉर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम. This is called as management by objective. So you have to focus the objective to solve the problem. Next is your technique based on analysis. So इसमें बहुत सारे short note. This SWAT analysis. This is also called as strength, weakness, opportunity, threat analysis. Strength is W, weakness, O, opportunity, and threats. Okay, T, SWOT analysis. इसमें क्या होता है? The individual and the organization who have their strength and weakness, and this relate to the internal environment. तो सबको पता है कि खुद का ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस. अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क, उसको बैलेंस करके. ठीक है, मान लीजिए आज स्वीपर कम आए हुए हैं, बट यू हैव टू क्लीन, सो यू हैव टू मैनेज अनदर स्वीपर टू क्लीन द ओपीडीज और ऑल दोस. सो दिस इज योर SWOT, the strength, weakness, opportunity and threat analysis. Okay, जिसमें कम है short note also. SWOT analysis. The second one is quantitative factor in evaluating alternative. Okay, SWOT के बाद क्या है? Other quantitative factors. The first one is cost effective analysis. तो हेडिंग से पता चलता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कितना खर्चा होगा, कितना इफेक्टिव होगा. सिंपली टेक्निक ऑफ वेइंग अल्टरनेटिव where the optimum solution can be conveniently reduced or in qualifiable form such as to rupee or some other measurable form to identify the preferred choice. This method is used in evaluating health of program where the outcome are not quantifiable in a money based directly. कोई प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग, कितना होगा पैसा तो खर्च कर देंगे, लेकिन कितना होगा ये हमको पूरा पता नहीं होता. This is cost effective. The second one is quantitative factor evaluation में second point क्या है? Cost benefit analysis. What do you mean by cost benefit? हम लोग जितना cost input करेंगे and output जितना होगा, output should be more. इसमें benefit होगा. So this technique is used in health planning. The input and the output of both are measured in monetary term and decide if a particular alternative is worth accepting. तो इसमें cost benefit कितना होगा, you have to measure. The third one is break even analysis or break even point. जिसमें कम है short note. इसमें क्या होता है? This is a very common tool for evaluating the economic feasibility of a new enterprises or a product. It identifies a point
at which the revenue is exactly equal to the cost of it. It is called as break even point. मतलब ना फायदा ना लॉस. ओके, चीज जो रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट जो है सेम होगा. मतलब 10 रुपए का चीज 10 रुपए में बेचेंगे तो कितना फायदा होगा? जीरो. सो कॉस्ट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो. तो इसमें क्या होता है, जो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज अ पॉइंट. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का पॉइंट होता है. इसमें टोटल रेवेन्यू वन एक्सिस में होता है और दूसरा एक्सिस में टोटल कॉस्ट होता है. कितना हम लोग कमाते हैं, कितना इन्वेस्ट करते हैं, जो पॉइंट में मीट करता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दैट पॉइंट? उसके नीचे अगर कुछ हो गया दैट इज द लॉस. उस पॉइंट के अबव कुछ हुआ तो दैट इज अ बेनिफिट. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन एनालिसिस. इसमें कम एज अ शॉर्ट नोट आल्सो. The next one is your decision tree. Decision tree क्या होता है? This is a graphical representation of possible solution to a decision based on certain condition. Trees are an excellent way to deal with this type of complex decision, which always involve many different factors and usually involve some degree of uncertainty. Okay, this is called a decision tree. And the last one is your forecasting. Forecasting is a basically management tool which is usually used for planning, forecasting. It relies on data from the past and the present, involving the analysis of trends and help to cope up with the uncertainty of the future. Forecasting is a tool for presiding future health events or situations such as demand for health service and healthcare needs. By this, using this forecasting, the health service provider are able to plan and take appropriate mitigation to minimize risk and prevent damage. So these are all the management tools and techniques for your with different techniques. So this is all about your management technique. And any doubt you can ask. Already I have told you some questions which may come in your exam review paper. Any doubt till now? So these are all about your managerial and administrative aspect of HCWM and the managerial and systemic, right? So any doubt you can ask, or you can take my WhatsApp number also. You can text me, I'll reply you. Okay, my number is I'll send it here. So you can note down my number 94376 95171. Sir, can you please repeat it? 9437 76 94376 95171 1. 95171. Okay. Okay, sir. Thank you. So you can text me any doubt you can ask me, or any doubt. These are the questions also I have discussed. Go through your books. कुछ समझ में नहीं आए तो you can ask me, or you can text me. No problem. Okay. Any doubt, or you can stop here. No, sir. No doubt. Okay. Thank you very much for your patience, Alice. Yeah. Thank you so much, sir. Okay. Thank you so much for your valuable input, sir. I'll go through your books, and any doubt you can text. Right, sir.
अभी सब गए क्या यहाँ से? हाँ जी। ये आपने वो बना लिए क्या? असाइनमेंट्स बना लिए? चल रहा है। ओके, कहाँ से लिया? खुद बना रहे हैं, लिया क्या? ओके, मतलब खुद, मतलब अच्छा, बुक से ढूंढ के ऐसा आंसर खुद, ऐसा वाला? हाँ जी, ऐसा वाला ही। बहुत मेहनत करनी पड़ती है मैडम, बहुत दिन रात पढ़ना पड़ता है। ओके। तो मुझे को बता सकते हैं, जो असाइनमेंट है हमारी उसकी लास्ट डेट कब की है वैसे? 15th में है। 15th और 30th मई। अभी एक महीना है। तो एक आपने मुझे महीना ट्राई नहीं है, फर्स्ट 15 दिन। वाले में आई थिंक 15 दिन है, 15। फर्स्ट 3 सबमिट करने के लिए, देन लास्ट वन इज आई थिंक देन 15 days, 15 मई एंड 30th मई बोला है। अच्छा, ये सबने सबने बुक्स पढ़ के लिखा है ऐसा? सब बहुत ग्रुप इंटेलिजेंट है मैडम यहाँ पे। ओके ओके। व्हाट्सएप हाय, माय नेम इज मीरा सरीश, आई जस्ट वांट टू नो कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना है क्या, क्योंकि मैंने जो नंबर दिया है। आप इस हाँ पे जी, अभी नो अभी शेयर मैम, किया अभी है तो रविंद्र बिश्नोई जी ने। किसमें मैम शेयर अगर किया है? इसी चैट चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में देखिए। ओके ओके, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं ना? जी जी। हाँ जी, उसमें ओके। हेल्प भी कर सकते हैं, अगर किसी ने असाइनमेंट बनाया हो तो भेज सकते हैं। इजी हो जाएगा सबके लिए। ओके, तो भेज देना, क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं किया। तो आप लोग एग्जाम कब दे रहे हैं, जून में दे रहे हैं या दिसंबर में दे रहे हैं? जून नो वे, जून। जून में। मैं तो दिसंबर में दे रही हूँ। मैं भी दिसंबर में दूंगा, अभी तो बुक्स अभी खोल के। पढ़ लिया ये? अभी ये कौन है जून वाला, उसने पढ़ लिया क्या सब कुछ? ये रविंद्र अरे बिश्नोई जी ये हैं, सीएचओ। फॉर्म फॉर्म भरने के बाद मेरे को पता चला भाई, अगर नहीं भरता तो दिसंबर में भी दे सकता था मैं। हाँ, आप दे सकते हैं, दिसंबर में ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कुछ नहीं, समझ ही नहीं आ रहा बुक्स में, मतलब बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अरे 40 मार्क्स ही लेने हैं। असाइनमेंट्स कितने मार्क्स के हैं? 30। वो असाइनमेंट्स में था आज बिश्नोई जी आपको बिश्नोई जी आपको मैडम ने बोल दिया कि बीएच वो 106 वाला ही जो लास्ट ईयर का है वही कर लीजिए असाइनमेंट। हाँ जी सर, वो मैंने ना मेल का आपको स्क्रीनशॉट भी डाला है, जो वहाँ से रिप्लाई आया ना, तो उसमें लिखा हुआ है भाई, जो मैंने साथ अटैच करके भेजा है, तो उन्होंने बोला है कि जो अटैच है साथ में असाइनमेंट वो आप सबमिट कर सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में थोड़ा सा वो डाल देंगे क्या, क्योंकि मैं अभी